We are here to answer your questions for hair transplant surgery and also related to shampoos and oil and vitamins, hair vitamins. And you can ask me any question related to anything like hair transplant and shampoos, oil and vitamins. You can ask questions in English and Urdu as well, and we will be answering in the same language. सर मेरा ऑयल पे क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो डिफरेंट ऑयल्स का मिक्सचर बना के वो यूज़ करते हैं, क्या वो हेयर्स के लिए इफेक्टिव होते हैं? असल में इसमें ऑयल होना ज़रूरी है। हम कहते हैं कि जब आप ऑयल करते हैं तो उसका एक मकसद है। ऑयल एक्चुअली मॉइस्चराइज़र होता है और मॉइस्चराइज़र करना चाहिए। जैसे हम स्किन के मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं कि स्किन को प्रॉपर हाइड्रेशन देने के लिए, इसी तरह होता है कि जब आप ऑयल नहीं करेंगे तो आपकी स्किन ड्राई होती रहेगी, मॉइस्चराइज़ नहीं करेंगे तो वो फिर डैंड्रफ बनने लग जाती है, आपके बाल टूटते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब हम ऑयल की बात कर रहे हैं, वो मिक्सचर हो या सिंगल ऑयल हो, तो मिक्सचर तो वो इसलिए करते हैं कि कोई ऑयल इफ़ेक्टिव हो जाएगा। लाइक अगर कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल का मिक्सचर कर लें या 10-12 का मिक्सचर कर लें, तो वो इसलिए कर रहे होते हैं कि हो सकता है इनमें से कोई एक ऑयल इफ़ेक्टिव हो जाए, तो इट्स गुड, कोई लेकिन करना ज़रूरी है। यस, हेयर वाइटामिन्स की ज़रूरत जो है वो चूँकि बाल गिरने कब शुरू होते हैं, हम कहते हैं बाल गिरने शुरू होते हैं अर्ली 20s और फिर वो गिरते रहते हैं। ये प्रोग्रेसिव लॉसेस होते हैं और कभी रुकता नहीं है हेयर लॉस, कि ये किसी भी एज पे ऑगमेंट होता रहता है। बहुत सारे फैक्टर्स बीच में आते हैं कि जैसे कोई कहता है मेरा ये इस शहर का पानी ऐसा था, इधर का वेदर ऐसा था, कभी कोई बहुत ठंडे एरियाज़ में जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो स्कर्दू सचिन और उधर रहते हैं उनके बाल बहुत गिरते हैं, बहुत हॉट एरियाज़ में रहते हैं उनके बाल गिरते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस बाल गिरना। तो यस, हम इसको शुरू कर सकते हैं अर्ली 20s में, और हेयर वाइटामिन यूजुअली 5-6 महीने ज़रूर लेने चाहिए। 1-2 महीनों से उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ना उनका कोई इफ़ेक्ट होता है। गैप अगर 2-4 दिन का या 8 दिन का आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई हेयर वाइटामिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गैप आ गया तो उसका सीक्वेंस टूट जाएगा, वो फिर से ले लें। ये तो हम वो कमी है ना, वो जो पूरी करनी है बालों के अंदर, कि जैसे कोई बायोटीन की कमी है, जिंक की कमी है, तो वो हम पूरी करें ताकि वो बाल जो स्ट्रॉन्ग हों और उसकी स्ट्रेंथ बने और वो जो दो मुंह हो जाते हैं वो ना हो। तो हम इन सारे कामों के लिए इसको कर रहे होते हैं। तो एनी टाइम अगर ब्रेक आ भी जाए दोबारा शुरू कर दें। Sir, my question is, what are the main causes of female hair losses in teenagers? Yes, female hair losses are divided in, like as you said, in teenagers and then early 20s, then late 20s, then 30s, 40s and 60s as well. What we observe is at any age, 3 major causes are there in female hair losses. Number 1, anemia, blood losses. Wherever it is anemia, blood losses will be augmented, hair loss will be augmented, okay? And other thing is 2 conditions. Number 1 is thyroid diseases. If someone like in females is having hyperthyroidism or hypothyroidism, she will be observing hair loss. And last one is gynecological hormone, disturbed cycle and everything will augment hair loss and will increase facial hairs you see in the females. So these 3 are major causes, and other like genetics, like weather conditions, like other things like hypovitaminosis, deficiency of vitamins is like are smaller causes with this.
but 3 major causes at any age. So your question is a very valid question. What I say is you should be going to the doctor if you observe early hair losses. It is very important to address the hair loss at teenage or like in early 20s, because if you start losing hair at the age of 18 or 20 or 21 or 22, then what will be happening to you in late ages, like in late 20s, like 30s or 40s. So it is very important to see the doctor at this kind of age, in teenage or early 20s. Assalamualaikum, sir. Sir, my question about hair follicle. Is follicle suitable for males only or for all the gender? Yes, you are very right. What is needed is hair vitamins are very much important in both genders, like female and male as well. If female are having some deficiency in hair vitamins, male will also be having some deficiency. Like in our society, we are deficient in dietary habits, like we don't see the good diets, like with all vitamins, minerals and everything. So we should be, what I advise to both genders, male and female, is they should be taking like hair vitamins for a certain period, like 5-6 months, and then they can take break for 3-4 years, and after that they can start it again for 3-4 months. And it does not bother anybody to take 5-6 months regularly hair vitamins. And what will be the benefit out of it is, for both genders it is very important to take vitamins to get their hair strong and get their strength back. My question about PRP. Is PRP very important with oil and shampoo? Yes, you are very right. When I'm saying hair treatments, I usually say everything is important. Hair vitamins are important, good shampoo is important, oiling is important, and as much as PRP is important. And along with PRP, other things should be done, like you should avoid hot showers on the hair especially. You can take hot showers on body but not on hair. I would advise everybody to take care of everything, like she should be or he should be taking vitamins, hair vitamins, using good shampoo, oiling every day, exercises every day, avoid hot showers. Then PRP will be working along with these things. Yes, PRP is very effective, especially in female, and male. In males it is also effective, but the problem with male is they are suffering from genetic losses, 90% of them. So the results would be there, but if he would be taking like finasteride, using minoxidil and everything, but we should be in scientific criteria when we are dealing with hair loss treatment. So female hair losses are treated in something like different way, and male hair losses are treated in something different way. So we should be thinking in mind that scientifically we are bound to do everything, like PRP, shampoos, avoiding hot shower, taking exercises regularly, and medicines which are designed for pattern losses in female and male, and deficiency of hemoglobin that I discussed with her earlier. Everything should be addressed. Then PRP will be working loads for both genders and in male and female. Sir, my question is, what is the limit of drugs in procedure FUT or FUT? Okay.
You are very right. This is very scientific question actually. Well, you are asking that how many grafts we can put in one patient. On very safer side, what I advise to the patient is that we should be doing smaller sessions. That could be very effective for hair transplant surgery, in sense that if we are doing small surgery, time of the surgery will be reduced. Number one. What would be happening is we are taking little, like we are doing 2000 graft surgery. In our office we are having too many persons doing slivering and graft cutting. So it would be very easy for you people, for my assistants, to manage 2000 graft surgery in like 2 hours, not more than 2 hours, and we will be able to put grafts back in the head as early as 2 hours, like less than 2 hours. And what we are doing is we are getting 100% progress or 100% result out of it. So I usually advise to the patients that if it is possible for them, they should divide the baldness in multiple sessions. Like they should be doing like max is 2500 grafts in one session. In next session they should be having 2000 grafts again, and in third session they should be having like 1500 grafts. So it would be, this is the scientific and good criteria if they are willing to do it. But you see, when in our office, when the patients are coming, they are insisting that I cannot come again and again for the same procedure. I cannot take pain or everything, like spending 1 day and spending 8 months to get the results back. And they think that this is botheration to come again and again for the same procedure. So they keep on insisting like, oh doctor, can you put like 3000 grafts or 3500 grafts for me? So putting 3000 grafts or 3500 grafts to me is okay, because the thing is, again I would come to the same point that we are having too many assistants to cover the whole procedure, because all of us are taking a step out, then all of us go for slivering, and then all of us go for graft cutting. So what we are doing is we are actually reducing the time of surgery and quality of the procedure, because if we put all this work on 2 people or 3 people or 4 people, they won't be able to give you quality work. Instead, we put all this work on 11 or 12 people, then what the workload will be divided into 11 people. A workload of 4 people is divided into 11 people. So you are getting quality work in short period of time. So again, it is discussion is needed on this, because what is needed is patient should understand this thing. So it should be like it is the patient who should decide about himself that he should be going for little procedures. What is the age limit of PRP? Oh, that's good question. Actually, PRP is done in our subject, in hair transplant surgery. PRP is done for two things, like one is for hair fall solutions, other is after hair transplant surgery. So usually the hair fall starts in like teenagers or like in early 20s in both genders, female and male. So the time is decided by the patient actually. When he will come to you for hair fall, we will give him. But in
kids like below 12 or 13, I don't advise these things actually. They should not be given any kind of treatment. They should be put on like conservative treatments, like he or she should be advised for oiling, avoid hot showers, little bit multivitamins, or if you see some iron deficiency, you should be treating them. But PRP is usually not advised in that age. It should be started like from late teenage ages, like in 18 or 19 or like this. सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है FUE के रिलेटेड से सर FUE किस एज तक हम करवा सकते हैं एग्जैक्ट एज? ये भी एक अहम क्वेश्चन है। असल में होता ये है कि FUE और FUT को कैसे डिसाइड किया जाता है। मेरे पास ये दिस इज़ माय ओपिनियन। मैं कहता हूँ कि FUT जो है वो 30 से पहले FUT ही करना चाहिए, FUE नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि देखें, आप एक बात सोचें, जिसको बॉल्डनेस या जिसके बाल गिर रहे हैं स्पेशली मेल जेंडर में अर्ली 20s में, वो 40 साल में या उसके कितने गिर चुके होंगे, बहुत गिर चुके होंगे। अब क्या करेंगे हम, उसको 20 साल या 22 साल पे हम उसके बाल FUE से निकाल लेते हैं, एक एक निकालेंगे, क्या होगा, पीछे खाली हो जाएगा। अब वो आपके पास आता रहेगा, वो 26 में भी आ जाएगा, मेरे और गिर गए हैं, जैसे कंटिन्यूस प्रोसेस, वो गिरते रहेंगे। आप जितना मर्जी रोकने की कोशिश करें वो गिरेंगे। वो 30s में फिर आ जाएगा, वो 40 में आएगा, वो 50 में आएगा। आप कहाँ से, आप तो डोनर डिप्लीट कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, आप कहाँ से लें। तो आपको जो FUE का स्टैंडर्ड है मेरे अकॉर्डिंगली वो 35 के बाद होना चाहिए प्रोसीजर, और उससे पहले FUT करें ताकि आप डोनर बचाएं और मैक्सिमम एरिया कवर कर लें। फिर आप अगर वो उसके हेयर लॉसेस होते भी रहेंगे तो हम FUE भी करते रहेंगे, FUT भी करते रहेंगे। तो FUE को इन अर्ली 20s लाइक मिड 20s में नहीं होना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। और बड़ा इसके ऊपर मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस है। मैं पूरी दुनिया में ये डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता हूँ। आई यूजुअली समटाइम्स आई बिकम हाइपर टू देम कि जब वो आप उसकी एक एग्ज़ाम्पल है ये, और उसमें एक नुकसान बहुत बड़ा है। डॉक्टर्स दे आर नॉट केपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग फॉलिकल्स सेफली इन FUE। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक लड़का आया, वो ही वॉज 25 ईयर, वो 2 साल पहले आया था मेरे पास जब वो 23 का था। मैंने उसे बताया कि तुम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराओ, हेयर लाइन कराना चाहता था। उसके बहुत अच्छे बाल घने, ये वो ही वेंट आउट। अभी कल परसों वो मेरे पास आ गया, वो किसी ने उसका FUE किया हुआ था। आप यकीन करें, मैंने किसी लड़की को कहा था इसके पिक्चर्स बनाओ, पता नहीं मारिया को कहा कि किसको, और उसका ये सारा, और मुझे लग रहा था उसके कोई 4000 ग्राफ्ट निकाल लिए उसके, और आगे कितने लगे हुए थे, ओनली 700 और किधर गए उसके सारे बाल। वो दे वेस्टेड एवरीथिंग। और वो अब बैठा हुआ रो रहा था। अब मुझे गुस्सा आ गया कि मतलब जब मैंने 2 घंटे, एंड ही सेड टू मी कि मैं आपके पास आया था, 2 घंटे आपने लगाए, मुझे समझाया, बट आई वेंट टू सम क्लिनिक अराउंड, किसी के पास चला गया, आई डोंट वांट टू मेंशन हिज नेम। वो बट देखें, एक तो वो प्रोफेशनल लोग जिन्होंने अपने एक्टर्स की तस्वीरें लगाई हुई हैं और वो लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और अंदर ये क्रूएलिटी करते हैं। और यकीन करें, मैं व्हाट आई सेड टू हिम इज, मैंने कहा गेट आउट ऑफ माय क्लिनिक। जब मैंने तुम्हें 2 घंटे समझाया और तुम आज आके मेरे पास मुझे गुस्सा आ गया उसके ऊपर। मैंने कहा मेरे क्लिनिक से निकल जाओ, मतलब। और सीरियसली आई शुड नॉट हैव डन दिस, बट मुझे देखें, आप अगर आप किसी इंसान के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, मुझे बताएं। और वो जिसको मैं 2-2 घंटे समझाऊं और वो जाके फिर वही हरकत करे और फिर रोता हुआ वापस आ जाए, तो ये बड़ी वो
अजीब बात है कि फिर वो उसके साथ फिर ठीक है, वो अपने साथ अगर इतना जुल्म करवा सकता है तो उसको फिर ऐसे ही करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, समझा ही सकते हैं ना। सर मेरा क्वेश्चन है कि ट्रांसप्लांट के बाद हमें ऑयल कब यूज़ करना है? ट्रांसप्लांट के बाद ऑयल अगर आप 8 दिन बाद यूज़ करेंगे तो डर होता है कि वो जो फॉलिकल लूज़ होके निकल ना जाए, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि 15 दिन बाद करना चाहिए, 2 वीक्स बाद शुरू कर दें। और ऑयल करने का तरीका ये होता है कि आप ना सुबह उठें और फिंगर टिप्स के साथ लगा लें और आधे घंटे बाद धो दें। वो कोई इतना देर लगाने का भी कोई वो नहीं है कि आप, बहुत सारे लोग कहते हैं रात को लगा लें, लगा रहना चाहिए, वो आपके हमें बेड ही ख़राब होंगे और कुछ नहीं होगा। वो सुबह उठें लगा लें, घंटा एक लग जाए तो बहुत है, मॉइस्चराइज हो जाता है। ऑयल जल्दी मॉइस्चराइज करता है। अगेन वही है कि ऑर्गेनिक ऑयल्स होने चाहिए। ऑर्गेनिक ऑयल्स आप कोई भी लगा सकते हैं। जैसे हम एक कंपनी से कह रहे थे ना, उन्होंने वो मल्टीपल ऑयल मिक्स करके एक ऑयल बना के दिया। तो हम कहते हैं वो, जैसे वो पहले क्वेश्चन इन्होंने किया था कि आप मल्टीपल ऑयल्स, उसका ये होता है कि उसमें बड़े सुपीरियर किस्म के ऑयल्स हैं। जैसे हर किस्म का ही ऑयल, ऑलिव ऑयल भी है किसी क्वांटिटी में, आलमंड ऑयल भी है उसमें, कोकोनट ऑयल भी है, एवरीथिंग इज़ देयर। वो सारे उसमें ऑयल हैं और बड़े सुपीरियर किस्म के ऑयल हैं। वो जिस कंपनी बना रही है वो, दे सेड टू मी कि आपको हम ये गारंटी करते हैं कि ये हमने नेचुरल एक्सट्रैक्ट से खुद बनाए हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ये नेचुरल ऑयल है जो उन्होंने खुद बनाया और बड़ी मेहनत से बनाए हैं। बड़ा कॉस्टली देते हैं वो, बड़ा महंगा जो होते हैं ना ऑर्गेनिक। जैसे आप कहें कि कोई कारपेट है, वो हाथ से बुना हुआ कारपेट और मशीन से निकले हुए की प्राइस बहुत डिफरेंस होती है। कि वो कहते हैं हमने हाथ से बनाया है, तो वो उसकी क्वालिटी और उसके अंदर वो जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा होती है। बट देखेंगे वो ऑयल तो कोई भी इफ़ेक्टिव है, बट ये एक कम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स है, तो हम कहते हैं ये ज़्यादा फ़ायदे वाला ऑयल है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईएफ एंड एफयूटी? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर लोगों को समझा दे। असल में ये इसका एक बैकग्राउंड है कि बैक इन 2011, 2010 एंड 11 हम व्हाट वी वर डूइंग इज़ कि वी वर डूइंग FUE more than FUT surgery, because the reason behind was the patient were coming to us with the demand of FUE. What we observed after 2-3 years is what we did is we depleted the whole donor areas, and patients were also understanding the same thing, that it is a big damage at the donor area. When we do big sessions like 3,000 grafts and 3,500 grafts in FUE procedure, it is a real damage to the whole donor area. What we are doing is we are taking one by one from the donor area and we are leaving nothing behind in the donor area. If you go for another procedure after 2 years or 3 years, then what you will be getting is absolute thinning in the donor area, and everything will be see-through, and you can patients actually, when they came back to me after getting FUE done, after 2-3 years of FUE procedure, they were asking me, doctor, is there any other option to do hair transplant surgery with this kind of big quantity of grafts? So what I thought at that time is we should be managing everything in FUT procedure. So what we did, we reduced the stretch in FUT procedure by using separation of the skin while donor harvesting, and what we ultimately eventually we reduced the pain at the donor site, we reduced the wastage of grafts in at the donor site. So jo IFI procedure was actually development in the FUT procedure, and FUT is upgraded into IFI
by me in this clinic, and we are very much happy with this, that we can safely extract now, harvest 4,000 grafts easily out of FUT procedure. And for patients' understanding is, IFI is advanced form of FUT procedure. So we don't want to confuse the patients actually. We want to tell them that it is advanced or upgraded form of FUT procedure. My question is, what is trichoptic closure? Trichophytic closure is actually what we do is we want to reduce or minimize the donor scars at the donor site. What we do in trichophytic closure is we trim the lower edge of this donor site when after getting out a strip from the donor site. We trim one follicular unit at the lower edge and move the lower edge at 60 degree and put it under the upper edge. So what happens is, after few months, like 3-4 months, the hair start growing at the site of scar. So trichophytic closure, in trichophytic closure, we actually want to hide the wide scars. This is the main reason of doing trichophytic closure. And you see, we do almost in every patient, like we are doing trichophytic closures. Thank you. And thank you very much. It was seriously really a good session. I was not expecting this this much big questions from your side. And this looks like a scientific session in some big conference. And very honestly, I hardly see this kind of questions coming out of doctors in the big conferences. But this is very useful session, and hopefully we will be doing these kind of sessions again in our clinic. And main reason for behind this doing these kind of activity is awareness. And we should be, if we are doing this much job and we are leading the market for last many years, and this is because of everybody working in the clinic. It is not only me, and nobody can be me only. It is only us when we are working. When you say it's me, then failure starts. But this is my opinion. When we are us, then success goes up. So everywhere it is only us. When we are working as a team, and it is my seriously my good luck. I'm having good team in my clinic, and we are working sincerely and professionally for the benefit of patients. And I would advise you people, when you are doing surgeries, like you are interacting with the patient, you should also be assisting the patient in getting good knowledge, so that he should be having, at least he should be having some knowledge on the subject. He should not be going in the clinics where business persons or managers are dealing with the patients, and non-professional work. As I told you, it happened with, it was not the only patient who, I saw 2-3 days before. I usually see one patient every day coming with these kind of complications. So it is our professional duty as well to educate the patient at certain levels, so that we are doing our duties. And if we keep on doing all these things, like giving knowledge to the patient every day, one day, believe me, one day would come that
they would understand what is happening around in the field of hair restoration surgery. So doing good job for the patient as well as giving them good knowledge is our duty. Thank you very much.